let's start by something which is of so importance to all of us. Now, in the past 48 hours, two stories have emerged that have made us all think about a question we perhaps might already know the answer to. But the question still is, how private is our privacy? I'm sure you're now thinking, of course, Sonal, it is, all of us know our data is up for sale, but what can we really do about it? It's a very valid question. It's one that we will attempt to answer in this episode of The Breakfast Club. But first, let's talk about what exactly happened in the past 48 hours. Story number one, let's talk about the app that over 315 almost Indians are using in India. It's Facebook. Facebook has been accused of allowing Netflix to access users' private messages in exchange for data. This revelation comes amidst the time that Meta's decision, Meta, remember, the parent organization of Facebook, Instagram, WhatsApp, several other apps that are all part of our lives now. This revelation is coming at a time when Meta has decided to do away with its own streaming business. They attributed it to cost-cutting measures and layoffs within the company. So what's happened? Meta stopped being a competition to Netflix, and Netflix got access to Facebook messages. Get the connection? That's story number one. What's story number two? The other platform we simply cannot do without these days, Google. Google has agreed to purge billions of records containing personal information collected from more than 136 million people only in the United States. The deleting of these records comes as part of a settlement it is now facing in a lawsuit which has accused Google of illegal surveillance. Those are the two stories that we both need to be looked at. But do something with me. Pick your phones right now and see the number of apps you have over there. Some of the most used apps right now on your phones are going to be owned by these two tech giants, Google and Meta. And what both these stories tell us is that your and my data is not ours anymore. In fact, it never was. Our search patterns, what we like, what we dislike, where we go, where we shop, what time do we shop, is gold for companies, and that's the price really that we are paying for using these apps all for free. The question then is, what should we do? Very simple question, and nobody seems to have an answer right now. Perhaps what most experts will tell you, that data privacy now is a myth. So we went around asking a couple of people what they felt about data privacy, and this is what they said. मेरे मोबाइल में लगभग होंगे 30 to 40 के अप्रोक्स में ऐप्स होंगे मेरे फ़ोन में। हमारे मोबाइल में बेसिकली तो 10-12 ऐप तो होंगे। लगभग 25-30 तो होंगे ऐप्स। होंगे कम से कम 20-22। लगभग मेरे मोबाइल में 50 ऐप्स होंगे कम से कम। मेरे मोबाइल में करीब 20-25 ऐप तो हैं। कभी नहीं पढ़ते, टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं पढ़ते। अगर ऐप नॉन होती है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है, तो मैं कई बार उसके बिना टर्म्स एंड कंडीशन पढ़े स्किप कर देता हूँ। जैसे अब जो लेटेस्ट ट्रेंड आ रहा है उसमें क्या होता है कि आपको परमिशन क्या क्या आ रहा है उसका एक नोटिफिकेशन आ जाता है, तो एक नज़र चला जाता है कि एट ए ग्लांस क्या वो लोग एक्चुअली में पूछ रहा है, तो हाँ थोड़ा बहुत तो पढ़ ही लेता है कि क्या पूछ रहा नहीं पूछ रहा। 50% में तो पढ़ के टर्म एंड कंडीशन करके एक्सेप्ट करते हैं, 50% में तो जब मतलब कोई काम में लगे रहते हैं तो फिर टर्म एंड कंडीशन पढ़ नहीं पाते। यूजुअली तो नहीं पढ़ते, बट कभी कभार ओकेशनली जो एकदम से पॉपअप होता है तो पढ़ लेते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन क्या क्या एक्सेस कर रहे हो वो मालूम चल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल मैं पढ़ता हूँ सारे। मैं डिनाई करता हूँ, जो अगर वो कॉन्टैक्ट मांग रहे हैं उसमें ज़रूरत नहीं है तो मैं डिनाई कर दूँगा। वो मेरा एक्सेस मांग रहे हैं कैमरे का, कॉल का, अगर उसमें ज़रूरत नहीं है मेरी तो मैं उनको डिनाई कर देता हूँ। पढ़ता है बट उस पर इतना ध्यान नहीं जाता, तो हम ऐसे ही रैंडमली डाउनलोड कर लेते हैं। देना देना तो है सर, बहुत मतलब इसमें हमारा बहुत एप्लीकेशन आज के टाइम में फर्जी भी है। फर्जी के कारण उनका मतलब बहुत डाटा उनका कैच हो जाता है। दिक्कत तो है, बहुत सारी दिक्कत है एप्लीकेशन। तो हर कस्टमर को या हर इंसान को टर्म एंड कंडीशन पढ़ के एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहिए। हाँ, बट नोटिस तो नहीं करते इतना कुछ। हाँ, ये मैं चेक करता हूँ, एक्सेस कौन कौन सा मिल रहा है उसको, ये मैं देख लेता हूँ।
ऑब्वियसली पड़ेगा, क्योंकि हमारा पर्सनल बहुत प्राइवेसी डाटा रहता है, कुछ चीज़ें होती है जो कि सेंसिटिव होती है, जो कि नहीं जाना चाहिए पब्लिक डोमेन में। तो और लाइक एक दो ऐप्स वगैरह होते हैं जहाँ पे मतलब डाटा लीक हो रहा है, वो पता है सबको कि हाँ वहाँ पे हो रहा है, तो उन सबको हम लोग को नहीं यूज़ करना चाहिए, एक बेसिक ही नॉलेज होना चाहिए। बिल्कुल फ़र्क पड़ता है सर, प्राइवेसी का मामला है, उसमें हज़ार चीज़ें होती हैं हमारी। कितनी दफ़ा ये जो बैंकिंग वाले ऐप होते हैं वो हमारा पूरा डाटा ले लेते हैं कॉन्टैक्ट का। Just so relatable, right? All those questions over there. So let's look at this data privacy story with two lenses. One with the lens of what the law can do, and the other what you and I can do personally to ensure that some level of gatekeeping is happening. Let me on that note introduce our first guest. We've got Khushbu Jain joining us. Khushbu is an advocate in the Supreme Court and also looks at this space very closely. Khushbu, welcome to TBC. Now we know that in India there is now a new law. Could you break it down for us on how these companies, which are all facing lawsuits in US, in EU, etc., under the new law, how do they stand liable for breaching of data in India? If they have not taken your consent, consent is something which is very important over here. Consent is something which they have to take. Without consent, they can't. So there are penalties from 50 crores to 150 crores to 100 crores, each one of it. Like, for example, if they don't take your consent, there is a 50 crore penalty. If they don't provide you an option to erase, option to take back, recall your consent, not providing of that option itself can lead to a 50 crore, up to 50 crore of a penalty. For example, there is a children or there is an minor, yes, children. In that scenario, if a parent doesn't give a consent and they don't provide that form, that itself is a penalty that can be imposed. So all I'm trying here is, till now, we as a user or we as a data principal did not know our rights itself, and because of that these data fiduciaries did not know their obligations, and all these things that we are seeing today is what it is happening. And if I have to put it, privacy is a myth is what we are living today's age. So this new law will bring in ownership to your data in your own hands. So you're right, privacy is a myth, and you're also right about now we have a law that empowers us. But what can individuals do? Like, what is the reporting mechanism in this law? So till now, yes, you did have right to privacy as your fundamental right, and you can file a petition in the court. But then again, coming directly to your answer, that question that it's expensive affair and individuals like you and me would not go for certain things if it has not directly affected me so much. Yeah. Second, that's coming in the new law, which I'm talking about, the DPDP DPDP Act, that provides for an authority, and that authority is where one can complain. And that authority will be an independent authority looking into these areas. So once you put a complaint, there would be, like, for example, it's a mandatory for all these platforms to have a grievance redressal. Not providing of grievance redressal is also a penalty imposed. Now, let's say I complain to these entities and something has not been, I'm not happy with it, or it's not been entertained. In that scenario is where I can go and file a complaint in these authority. The authorities are there in all over. If you look into GDPR also, there is an ICO, which has imposed a lot of penalties on Meta and others. The same kind of authority comes in India as well. Once this board, the authority that comes into existence, is where it will specifically look into data related aspects dedicatedly, and it will make job easier for people like you and me to put a complaint against these entities, and we can put a complaint against any entity across whichever we are using it. Right, but Khushbu, tell me this: in your experience, do you think this will work? It is working. If you look into the kind of penalties which is imposed, we're talking about the same entities which are in India doing the same thing in India, and same thing, in different countries, and different countries have laws, and there have been penalties which have been imposed. If I have to be transparent, I think they even keep aside the penalty aspect also as, their cost to the product which they're developing, because we are getting into the age of AI where data is literally everything. So I think they have become little more smart, where they understand that this is also a cost to us, that whatever the penalty comes will also be a cost. But this is for the big companies. For medium size, small size companies, this will create a lot of difficult situation for them. But at the same time, this will create a situation which makes it easier for you, me, and all of us to live in a world where there are less crime happening, and we do understand that there is something called as privacy.
Well, thanks, Khushbu, for that very candid answer over there. Yes, these companies are smarter than us, ahead of us, understand the tech more than us. So you're right, the smaller companies might be taken care of when it comes to the bill. But what happens to the big giants, not just India, the world perhaps is still struggling to find answers to that. Okay, so that's the law side of it. But what can you and I do in our phones perhaps to sort of do some sort of gatekeeping, some sort of security features that can be activated on our phone? Let me bring in Jiten Jain next, joining us on the Breakfast Club. Good morning, Jiten. Thanks so much for talking to us. You have been saying this for a while. We've had multiple conversations where you've said that data privacy is a myth. But give us some tangible takeaways today. I want to know from you, is there anything we can do on our phone right now to just ensure it's a little safer? It won't be the safest. Is it just safer? See, we have to understand the psychological game. If anything is offered to you on internet for free, then you are the product. If any product is free, then you are the product and they're going to sell you. They're going to sell your data, they're going to sell your faces, they're going to sell your pictures, they're going to sell your messages. That's number one. Second, if any for-profit company, now I'm distinguishing between a non-profit company and a for-profit company. If any for-profit company is promising you any security feature, Apple promising you that we will not break the key locks of a terrorist or of Delicium and all those things. Snapchat promising you that you can send your private pictures in a disappearing message board and nobody will be able to copy. Or WhatsApp telling you that your end-to-end encrypted messages are safe and will not be sharing it to you with anyone. Mark my words, they will do exactly opposite. They will give privileged access to law enforcement agencies. They will give privileged access to other business partners for those very messages. We all saw that how Snapchat's photos were leaked for millions of users, and that was only possible because somewhere it was being stored. So, they will find some way around this thing that, for example, take example of this Facebook and Meta deal. Now, Facebook said that your Facebook messages are now end-to-end encrypted. Fair enough. They say that we don't read your messages, but they never said that we will not give a backdoor access to a third party who can read your messages. So it's jugglery of words. तो करे क्या? दो चीजें आप कर सकते हो. नंबर वन, आई थिंक अपने फोन में वही सब रखो जो आपको किसी को कीपैड अनलॉक करके देने के अंदर अनकंफर्टेबल चीजें ना हो. Now that includes your messages, your private photos, your you could say banking passwords and all. ये एक तो ये है. दूसरा, anybody at randomly who is now asking you to enter your phone number and email ID at random places like shopping stores, यहाँ वहाँ हाथ जोड़ लो और नहीं संभल पाते तो गलत नंबर लिखना चालू कीजिए और एक फेक ईमेल आईडी बना लीजिए इसी तरह के स्पैम में देने के लिए. 1 2, जो आपके फोन के अंदर कोई भी आपका सेंसिटिव डेटा, ये तो हम ये कह नहीं सकते कि आप अपने फोन से पिक्चर्स मत खींचिए या प्राइवेट पिक्चर्स मत रखिए, सब रखते हैं, मगर हर मंथ के एंड पे आप उसको एक हार्ड ड्राइव में कहीं पे बैकअप पे ले आइए, अपने फोन के अंदर मत छोड़िए. आप ये मान के चलिए कि आपके फोन का एक्सेस कभी ना कभी किसी को मिलेगा और उस समय आपको कोई अनकंफर्टेबल सिचुएशन में नहीं आना चाहिए. उसका तरीका एक ही है कि फोन पे कोई अनकंफर्टेबल डेटा ना हो, उसका कोई और तरीका नहीं है. आप सोचो कि हमारा एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड है, ये 24 बिट का एन्क्रिप्शन लगा लूं या कोई मिलिट्री ग्रेड एन्क्रिप्शन लगा लूं या मैं कीपैड का पासवर्ड नहीं दूंगा. जिससे बहुत सारे लोग बहुत खुश हो रहे हैं कि एप्पल ने अरविंद केजरीवाल का फोन खोलने से मना कर दिया, मतलब एप्पल 100% सेफ है. बॉस, ये सब प्रोपेगेंडा है. जिसका देना होगा उसका देंगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली सिचुएशन, और जिसका नहीं देना होगा उसका नहीं देंगे. तो मान के चलिए कि द ओनली गेट कीपिंग, द ओनली सिक्योरिटी ऑफ व्हाट यू कैन डू ऑफ योर डेटा इज यू योरसेल्फ. नो प्राइवेट कंपनी, नो रेगुलेटर, नो गवर्नमेंट और नो टेक एंटरप्राइज विल कम टू योर एड. दे आर ऑल देयर आउट टू स्टील योर डेटा, ग्रैब योर डेटा, मोनेटाइज योर डेटा एंड सेल योर डेटा. और एक चीज और आपको समझने वाला कि जो भी हमने आज तक सुना कि फेसबुक का डेटा कैम्ब्रिज एनालिटिका यूज करके इलेक्शन इन्फ्लुएंस कर रहे थे या नेटफ्लिक्स को दे दिया. देखिए, नेटफ्लिक्स, वो कहते हैं ना, somebody was caught pants down. नेटफ्लिक्स पकड़ा गया. देयर इज नो वे दे हैव मेंशन्ड कि हमने नेटफ्लिक्स के अलावा किसी को नहीं दिया. इससे पहले गूगल पकड़े गए थे, जब उबर पकड़ा गया था, जब उबर ने आपके फोन के लाइव माइक्रोफोन का एक्सेस एक थर्ड पार्टी को दे दिया था. और जब पकड़े गए तो कहा अरे नहीं, वो वुमेन सेफ्टी के लिए हम लोग 15 मिनट बाद तक लोगों को मॉनिटर कर रहे थे, वो कहाँ जा रहे हैं और किससे बात कर रहे हैं. Yeah. But Jiten, you've painted a not so nice picture about what really lies ahead and what current realities of our times is really. But can you give us 5 things that people can do
to just ensure that some sort of gatekeeping is happening? So instead of spending any money on an antivirus product or any encryption tool, buy a new SIM card और एक 2000 रुपए का फोन, वो सिर्फ बैंकिंग के लिए और ओटीपी के लिए यूज कीजिए, उस पर स्मार्टफोन रखिए ही मत, ना उस पर व्हाट्सएप इंस्टॉल करना है, ना कुछ करना है। तो एक सिम, एक मोबाइल फोन और एक अपने मुंह को बंद रखने की आदत, और अपने हाथों को कभी अपना मोबाइल नंबर, वो नंबर किसी और को अपनी फैमिली के अलावा पास ऑन करने की आदत। और पांचवा, अगर आपके साथ कुछ गलत हो जाए, ये पांचवी सबसे बड़ी आदत, आपको डर के किसी को कोई रैंसम ब्लैकमेल कुछ नहीं होना है। यू हैव टू अप्रोच द रेगुलेटर और पुलिस। कोई आपका कुछ नहीं उखाड़ सकता बॉस। जैसे धड़ल्ले से चोरी हो रही है, वैसे धड़ल्ले से आप बच के भी निकल जाओगे। तो ये 5 आदत है कि एक नया सिम ले लो, नया फोन ले लो, मुंह पे ताला लगा लो, और हाथ पे लिखने की आदत, गलत नंबर, गलत ईमेल आईडी की डाल लो, और 5वां, डरने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा इफ समबडी टेल्स यू कि आप ये एंटीवायरस मोबाइल्स पे इंस्टॉल कर लो, बॉस लेट मी टेल यू, एंटीवायरस ऑन मोबाइल फोन आर डेड। I have never seen a case where an antivirus caught a genuine virus or a malware. It has never worked. Who and mighty, who are all infected by malwares, they all had antiviruses on their phone. It never worked. तो उस पर अपना पैसा खराब मत करो। दूसरा, कोई भी चीज जो आपको लग रहा है कि यार ये बिटकॉइन में पैसा डाल दो, 3 महीने में 10 गुना हो जाएगा, एफडी में 2 गुना मिल रहा है, बॉस कोई आदमी जिसको इजी मनी कमाने का तरीका पता है ना, वो खुद कमा लेगा, आपको तरीका नहीं बताएगा, तो उसको पहले लात मार के भगा दो। तीसरा, आपके अगर कोई डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग अगर आप मोबाइल के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले ये करना है कि उस ऐप को इंस्टॉल करने से पहले आप लैपटॉप कहीं पे जाके उस नेट बैंकिंग की ट्रांजैक्शन लिमिट को आप डेली लिमिट पे सेट कर दो, 2000 रुपए, 3000 रुपए। बहुत रेयर होगा कोई आपको बड़ी ट्रांजैक्शन करनी होगी, कोई बड़ी परचेज पेमेंट करनी होगी, और आजकल सारे आप 2 मिनट में नेट बैंकिंग में लॉगिन करके हाथों हाथ अपनी लिमिट इंक्रीज कर सकते हो। मगर किसी भी फ्रॉडस्टर से बचने का इस समय सेफेस्ट तरीका है कि अगर आपका फोन वो हैक भी कर ले, ओटीपी ले भी ले, तो 2-3 हजार रुपए से ज्यादा आपका चूना ना लगा। आप समझिए, जिस गूगल की आप बात कर रहे हैं वो एप्स नहीं है, वो गूगल ऑपरेटिंग सिस्टम भी उसी कंपनी का है। आप आईफोन की बात कर रहे हैं, वो खाली मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी एप्पल का है। और जितने प्रिविलेज एडमिनिस्ट्रेटिव एपीआई है उनके पास सब हैं। आप सोचो कि मैं अनलॉक, कोई मैं पासवर्ड लॉकर लगा दूं या कोई कीपैड लॉक लगा दूं, वो सब आपकी अपनी तसल्ली के लिए है कि आपकी बीवी, आपका पड़ोसी, आपका दोस्त आपको मोबाइल एक्सेस ना कर ले। कंपनी आपका सारा 100% डेटा एक्सेस करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। All right, I can listen to Jiten all day long talk about this, but thanks so much Jiten for joining us. Perhaps what you need to understand is आप अपने phone पे क्या करते हैं, आप अपना data कैसे secure करते हैं. Maybe the next time around we'll try and get that answer from you. All right, but let's move on now. Data privacy, it clearly seems we cannot control unless you're Edward Snowden, of course, and if you don't know him, please look him up. So data privacy is a myth, but endless waiting for your flight to take off is not. Aviation security watchdog, the BCAS, has now issued guidelines that will allow passengers to exit from the aircraft in case there is a long delay in operating the flight after boarding.